Good morning, students. Today we are going to start our second part of civics chapter number 3, the parliamentary system. Beta, you have understood that parliament consists of president and two houses, Lok Sabha and Rajya Sabha. Now we will be seeing that how parliament works. So let us start with the chapter. Students, let us start our topic, the parliament in session. Beta, the period in which the house meets to conduct their business is called session. Our constitution has given power to the president to summon any house if there is a gap of the meeting of more than 6 months. There is a rule that these two houses to conduct their meeting twice a year. अगर इसमें 6 महीने से ज़्यादा का अंतर हो जाता है और हाउसेस मीटिंग कंडक्ट नहीं करते हैं तो प्रेसिडेंट को ये पावर है कि वो किसी भी हाउस को सम्मन दे सकता है टू कंडक्ट देयर मीटिंग. And also he can discontinue the meeting of either house without dissolving it. Not only this, dissolve the house of the people in consultation with the Prime Minister. Now what is the house of the people? Beta, this house is the people is Lok Sabha. इसे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के साथ कंसल्ट करके डिसॉल्व भी कर सकते हैं. A minimum of 1/10 of the total members of the houses should present in the meeting of or conducting business of the parliament. Functions of the parliament. Beta, parliament has several functions. उनमें से कुछ की बात हम करते हैं. इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लॉज, जो नए लॉज बनते हैं वो पार्लियामेंट ही बनाती है. सेकेंड थिंग, फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट्स इनकम. थर्ड, कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव्स. एंड फोर्थ, ऑर्गन ऑफ इंफॉर्मेशन. बेटा, पार्लियामेंट ही गवर्नमेंट के इनकम के ऊपर कंट्रोल करने में मदद करती है क्योंकि आप सब जानते हैं कि अपोजिशन पार्टी भी होती है जो गवर्नमेंट की वर्किंग पर नज़र रखती है और उसको कंट्रोल भी करने में काफ़ी हद तक काम करती है. एंड कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, एज यू ऑल नो, एग्जीक्यूटिव्स आर द मेंबर्स ऑफ IAS और PCS. दे हेल्प in implementing laws and they also help in administration. So the control over the executive is also done by the parliament. Now it also works as the organ of the information and also controls it. Introduction of new laws. Beta, parliament can introduce new laws and change the old ones. That means according to the change in society, laws should be changed. जो लॉ बहुत साल पहले बन चुका है हो सकता है वो लॉज इस समय काम ना करें क्योंकि परिस्थितियां बदल चुकी हैं, तो उसके अनुसार पार्लियामेंट पुराने लॉज को बदल कर न्यू लॉज ला सकती है. सेकेंड थिंग, अ लॉ इज़ अ फर्स्ट इंट्रोड्यूस in the form of a bill. Now, what is this bill? Beta, bill is a draft of proposed law. That means bill is a form of introduction of the law which had to be changed or whatever new laws had to be made of that, an information type. And the bill can be broadly classified into 3 categories. Now, what are these 3 categories? They can be in form of money bills, ordinary bills and the constitutional amendment bills. Now let us talk about money bill. Beta, money bill contain provisions related to tax regulations, regulation of borrowing of money by the government, payment
to or withdrawal from the contingency or the consolidated fund of India. इसका मतलब ये है कि जितने भी पैसे से रिलेटेड काम होते हैं वो सारे मनी बिल्स में आते हैं, चाहे वो टैक्स से रिलेटेड हो, चाहे सरकार का पैसा बोरो करना हो, या फिर किसी गवर्नमेंट को दूसरे गवर्नमेंट को या पेमेंट वगैरह से रिलेटेड कोई भी बात हो जो कॉन्टीजेंसी फंड से रिलेटेड हो. नाउ व्हाट इज़ दिस कॉन्टीजेंसी फंड बेटा? इट इज़ अ फंड kept aside by the government for urgent expenditure, or we can also say the unexpected expenditure. जैसे आपका कोई प्राकृतिक आपदा आ गई या किसी देश के साथ लड़ाई छिड़ गई, इस तरह के आपदा के समय जो फंड यूज़ होता है उसे कॉन्टीजेंसी या कंसोलिडेटेड फंड कहते हैं. ऑर्डिनरी बिल्स. Ordinary bills are the draft proposals for ordinary legalization. That means laws वगैरह बनाना उनको ordinary bills में शामिल किया जाता है. Now third type of bills are constitutional amendment bills. Better, these bills deals with the amendment of our constitution. They can be introduced in either of the House of Parliament. That means जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स होते हैं वो दोनों हाउस में से किसी में भी इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं, चाहे लोकसभा में और चाहे राज्यसभा में. और कॉन्स्टिट्यूशन, यू नो दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. अगर उसमें कोई अमेंडमेंट करना है, कोई संशोधन करना है, तो वो इस बिल के रूप में प्रस्तुत किया जाता है. फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट्स इनकम. द पार्लियामेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड इवन provides the way and means to raise the revenue whatever required, and the income which comes from this raised revenue that should be spent on authorized purposes only. Parliament also exercise financial control over the government through the budgets. आपने देखा होगा हर साल बजट पेश करता है, हर मंत्रालय अपना अपना बजट पेश करता है. ईयरली एनुअल बजट होता है वो, और उसमें उन्हें कितने इनकम हुए, कितना उन्होंने खर्च किया, ये सारी चीज़ें उस बजट में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स देते हैं. एंड ऑल्सो सी द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड ग्रांट्स एंड कॉन्टीजेंसी फंड ऑल्सो. सो इन लाइक दिस वे द पार्लियामेंट controls the government income. Students, I have already told you about budget, but again I will remind you that the government places its annual financial statement or the budget before the parliament, and this budget shows the income of the government in detail and how the money will be spent during a particular year. These all things are presented before the parliament in detail. So the budget is an annual process. You have seen the live telecast nowadays on the TVs whenever the financial years end. Control over the executive. Beta, Parliament keeps check on the ministers and their work. Members of the Parliament have right to question the minister about the policies and programs of the government. And these questionnaires begins just before the 0 hour, and these questions related to the functioning of the ministers, that is done in questionnaire. Just after that the 0 hour begin, and in this 0 hour beta the members can raise issues of public interest. अगर उन आंसर्स से, गवर्नमेंट के आंसर्स से अगर सेटिस्फाई नहीं होते हैं मेंबर्स, तो वो लोकसभा में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास कर सकते हैं, जिसके द्वारा गवर्नमेंट को पावर से हटाया जा सकता है. ऑर्गन ऑफ इंफॉर्मेशन.
Beta, Parliament works as an organ of information also, because any time member of Parliament can be called for any information, except the information which may threaten the security of the country. Beta, these informations are truthful and precise also. Not only this information is collected by debates or by specific medium of questions to the ministers. So now we have understood that Parliament is not just a law making body, but it has many other functions to do. So we can also say that it is multifunctional institution. The President. Beta, the President is the head of the state. Here state means country. He is elected by an electoral college, which consists of elected members of both the houses and the legislative assemblies of the state and union territories only Delhi and Puducherry. He is elected for the term of 5 years. Now eligibility. Who can become the president? The candidate should be a citizen of India, above 35 years of the age, and not holding any office of profit under the central or the state or local governments. Now we will be talking about salary and allowances of president. बेटा, प्रेसिडेंट को 5 लाख पर मंथ सैलरी मिलती है. इसके अलावा कुछ दूसरे अलाउंसेस भी मिलते हैं जो परमिसिबल हैं बाय लॉज एनफोर्स फॉर द टाइम टू टाइम. The salary and allowances of the president cannot be reduced during the president's term of office. Powers of the president. We will be talking about the powers of the president in different points. First point is legislative powers. बेटा, legislative powers में president किसी भी हाउस को समन कर सकता है और सस्पेंड भी कर सकता है. And he is having also the power to dissolve the Lok Sabha in consulting with Prime Minister of India. Not only this, he can address any house या फिर दोनों हाउसेस को एक साथ भी एड्रेस कर सकते हैं. He can also address a joint meeting of both the houses of parliament at the beginning of first session or after every general election. And not only this, beta, President can also issue ordinance when the parliament is not in session. And do you know beta, these ordinance has same authority and force as the parliamentary laws. लेकिन ये केवल 6 महीने तक इफेक्टिव होते हैं और इन ऑर्डिनेंस की वैलिडिटी पार्लियामेंट को 6 महीने के अंदर पूरी करनी होती है, नहीं तो ये विड्रॉ हो जाते हैं. इसके अगेंस्ट कोई एक्शन भी लिया जा सकता है. लेट अस टॉक अबाउट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू अपॉइंट द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी एज द प्राइम मिनिस्टर. ही ऑल्सो अपॉइंट्स द गवर्नर्स ऑफ द स्टेट and he appoints the chief justice and other judges of the Supreme Court and High Court. He also appoints the chairman and members of UPSC and the Attorney General. Judicial power. President has the power to grant pardon or to reduce the sentence of a person convicted of any offense. He can also pardon a death sentence. बेटा, इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो किसी भी व्यक्ति को जो विक्टिम है उसकी सज़ा को कम कर सकते हैं. और यही नहीं, वो किसी व्यक्ति को जिसे डेथ सेंटेंस दी गई हो या मौत फांसी की सज़ा दी गई हो, उनकी भी सज़ा को माफ़ कर सकते हैं. चलिए अब बात करते हैं फाइनेंशियल पावर्स की. प्रेसिडेंट के पास फाइनेंशियल पावर्स क्या क्या होते हैं. सबसे पहला बेटा, जो भी एनुअल बजट पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया जाता है वो प्रेसिडेंट के नाम से ही प्रस्तुत किया जाता है. और कोई भी मनी बिल बिना प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के
पहले भेजा नहीं जा सकता या विदाउट द रिकमेंडेशन बाय द प्रेसिडेंट इट कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट एंड इन द केस ऑफ अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर प्रेसिडेंट कैन ग्रांट एन एडवांस फ्रॉम द कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया. मिलिट्री पावर्स. बेटे प्रेसिडेंट सुप्रीम कमांडर है हमारी तीनों फोर्सेस का, जो आर्म फोर्सेस हैं उसका. यही नहीं बेटा, ही हैज़ द पावर टू डिक्लेयर द वॉर एंड ऑल्सो टू कंक्लूड पीस. ही अपॉइंट्स द चीफ ऑफ एयरफोर्स, नेवी एंड आर्मी. डिप्लोमेटिक पावर ऑफ प्रेसिडेंट. बेटा प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट इंडिया at international forum and receive ambassadors from other countries. The president appoint the ambassadors and high commissioners to other countries also, and all international treaties and agreements are concluded in the name of president only. Emergency powers of president. Beta, president has certain special powers to deal with the emergency situations. For this beta, what are these powers? See here. In case of an external aggression or an armed rebellion, जैसे अभी चाइना के साथ या पाकिस्तान के साथ सिचुएशन चल रही है, वो सिचुएशन. एंड नंबर 2, if the constitutional machinery of a state break downs. Number 3, if there is a threat to the financial stability of the country. In these cases, President have some special emergency powers with him. When the state faces the breakdown of constitutional machinery, the President take over the rule, and this rule is known as President's rule. Better, President is the constitutional head and exercise his powers on the advice of Prime Minister and the Council of Ministers. But the position of President is one of the authority and prestigious position in the country. President can also be removed, and why and when it will be removed or how it can be removed, it is better. See here. President can be removed from the office on the ground of violating the Constitution. The process of removing President is called impeachment. The Prime Minister and the Council of Ministers. Beta, we all know that Prime Minister is the head of the majority party and he is the leader of Lok Sabha also. Not only this, President work according to the advice of Prime Minister. Prime Minister is link between the President and the legislature. He is also responsible for an effective functioning of the government. He is also the head of the government. Council of Ministers. Beta, there is a Council of Ministers headed by Prime Minister, and whatever work President do, he does with the advice of these two, Council of Ministers and Prime Minister. And beta, the Council of Ministers is divided into Cabinet Minister, Minister of State with independent charge, and Ministers of State. The Cabinet Ministers hold the highest rank and take important decisions. They also see the work of different portfolios or department at central government, like finance or defense. Minister of State have to abide the decision made by the cabinet. Now come to the eligibility. Better, a person who can become the minister, he should be a member of either house, Lok Sabha or Rajya Sabha in the parliament. Not only this, a person who is not a member can also be appointed as a minister, but only for 6 months. During this time, he had to obtain the membership of either house,
लोकसभा और राज्यसभा में से किसी की भी मेंबरशिप उसे लेनी होती है. नाउ कम टू द वर्किंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. बेटा, द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. Council of Minister works under the Prime Minister as a team, and this team is collectively responsible and answerable to the Parliament for any decision taken by it. If a vote of no confidence is passed against the government, the Council of Ministers has to resign. That's all in the chapter. Thank you, student, and have a nice day.